Assalamualaikum students. As you all know, we have started our chapter Aliphatic Hydrocarbons, in which we are studying about alkenes. Today we have to discuss their physical properties and chemical reactions. So first physical property is about the physical state, which says that first three members, which are ethene, propene and butene, they are gases, while carbon 5 to carbon 15 alkene is liquids, and carbon 15 से जो ज़्यादा वाले alkenes हैं, they are all solids, right? Second one is solubility. They are insoluble in water but soluble in alcohol. Unlike alkanes, they were not soluble in polar solvents, they were soluble only in non-polar solvents. Thirdly, they have a characteristic smell in themselves that is too unlike that of alkanes because they do not have any smell. Hybridization, they have sp2 hybridization. Each carbon in alkene is sp2 hybridized, which makes it weakly polar because it has pi bond in it, while in case of alkanes we discussed that each carbon is sp3 hybridized and it was non-polar. So coming to the reactivity of pi bond, as you all know, alkenes have double bond in them. It means one of it is sigma while the other one is pi. Pi bond is formed by the parallel overlap. If electrons are overlapping in a parallel fashion, it means the bond is away from the line joining the two nuclei. If the bond is away from the line joining the two nuclei, it means two atoms are not holding it too strongly, which makes it weak. So pi bond is weak as compared to sigma bond because it is away from the join lining the two nuclei, and also it makes them more reactive than alkanes. Why they are more reactive than alkanes? Because in alkanes there was only sigma bond present, which is a very strong bond, which is very difficult to break, while in case of pi bond now it is weak, so it can be easily broken. And also because of the pi electrons, they can attack on electrophiles. These pi electrons can attack on electrophiles. What are electrophiles? Electrophiles are basically species which are electron loving. जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं उन स्पीशीज को कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स. Coming to the reactions of alkenes, number one are addition reactions. Addition reactions are those reactions in which we add some things. हम दो चीज़ों को add up करके कोई एक चीज़ बना रहे हैं, ठीक है? Add कर रहे हैं हम, addition reaction. First one is hydrogenation. As the name says, we are going to add hydrogen into the alkene. It happens usually in the presence of catalyst and a moderate pressure 1 to 1.5 atm. This is not 5, this is 1.5 atm. Heat of hydrogenation is basically the heat released when hydrogen is added to the double bond. So usually it is 120 kilojoule per mole per double bond. यानी कि एक double bond के across जब हम hydrogen add करते हैं तो it releases 120 kilojoule per moles. The catalysts usually used are platinum, palladium and Renin nickel. What is Renin nickel catalyst? Renin nickel catalyst is made by nickel aluminium alloy by treating it with caustic soda. तो हमने nickel aluminium का alloy लिया है and we have treated it with caustic soda, जिससे हमारे पास क्या produce हुआ है? Nickel catalyst. This is known as Renin nickel. So this is used for the hydrogenation of alkenes. Okay, as you can see over here, this is an alkene, this one. It has double bond over here. I'm going to add hydrogen. There are two hydrogens. One is going to this carbon and the other one is going to this carbon in the presence of nickel. This will come as CH. I have placed, yes, CH2, this CH2, single bond CH3, okay? And the second example is of benzene. Benzene has 3 double bonds. It means we need 6 hydrogen. Why? One across this carbon, second, third, fourth, fifth and sixth. Because for each double bond we need 2 hydrogens. So there are 3 double bonds. We are going to need 6 hydrogens. So I'm going to add 3 hydrogen molecules in the presence of nickel, and it will turn benzene into cyclohexane with no double bond at all. Second reaction is addition of hydrogen halides. Hydrogen halides, as you all know, are HX, where H is the hydrogen and X is the halogen. Halogen may be fluorine, chlorine, bromine, iodine, etc. Look over here. This is the mechanism for adding hydrogen halide to alkene. What happens is this: these pi electrons, they attack over hydrogen, which is partial positive. These are electrons. They are attacking on the electrophile, which requires electrons. ठीक है?
क्योंकि हमारे पास जो X है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ज़्यादा, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव. सो दिस इज एन इलेक्ट्रोफाइल, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन्स. तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल अटैक ओवर हाइड्रोजन और ये X नेगेटिव निकल जाएगा. सो ये क्या होगा, CH2 पॉजिटिव एंड CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो इस कार्बन के पास या फिर इस कार्बन के पास चला जाएगा हाइड्रोजन. तो अगर इस कार्बन के पास जा रहा है ये तो होगी CH3, 3 and 4, इसके दो बॉन्ड्स पूरे. बट लुक ऑन दिस कार्बन, इट हैज़ 3 बॉन्ड्स. तो उसके ऊपर मैंने क्या शो किया, पॉजिटिव चार्ज शो किया, विच मीन्स इट इज अ कैटाइन. इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में X नेगेटिव आता है, एरो गोज फ्रॉम हियर टू हियर. So this X negative approaches this carbon और यहाँ पे आके ये attach हो जाएगा. There is a rule which says, there is a rule named Markovnikov's rule which says if you are adding an unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, what I said, unsymmetrical reagent, unsymmetrical मतलब उसके अंदर poles होंगे positive and negative, to an unsymmetrical alkene. This was a symmetrical alkene. 2 कार्बन थे इसके अंदर, ठीक है, तो दोनों के पास सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स थे, they were both equal. Look at this alkene. इसमें जो डबल बॉन्ड है, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है. So this is a unsymmetrical alkene. So when you are adding unsymmetrical reagent like this, जिसमें एक negative end और एक positive, to an unsymmetrical alkene, then the negative part of the reagent goes to the carbon which has less number of hydrogens. Negative part goes to the carbon which has less number of hydrogens. I'm repeating it again. If you're adding unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, then the negative part goes to the carbon which has less number of hydrogens. It means hydrogen will go to the carbon which has more number of hydrogens. Alright. So when we are going to add HBr to propene, according to Markovnikov's rule, the negative part, Br negative, is going to the carbon which has less number of hydrogens, which is this middle carbon. So I'm going to attach Br with this carbon, and ultimately the hydrogen will go to this carbon, it will become CH3. Also, if we do not apply Markovnikov's rule, तो हमारे पास क्या product बनता, Br यहाँ पे ऐड कर देते CH2Br, तो ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाता, क्या बनता CH2, बट दिस इज रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू Markovnikov's रूल हमारे पास सिर्फ यही प्रोडक्ट बनेगा. वी हैव टू फॉलो Markovnikov's रूल. सेकेंड वन, एज यू कैन सी द कार्बन, इफ ओके इट्स क्लियर, I have taken this alkene which has 2 methyl groups and a double bond, this one. Now the negative part of the reagent is going to the carbon which has less number or no number of hydrogens. इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब Br इसके पास जाएगा, तो ये देखें क्या बनेगा, CH3, तो एज पर द स्ट्रक्चर जो पीछे हमारे पास था, CH3, दिस वन यहाँ पे हमने ऐड करना था, तो ब्रोमीन मैंने इस कार्बन के साथ ऊपर अटैच कर दिया, एंड दिस CH2 बिकेम CH3. दिस इज राइट. दूसरी तरह आप क्या करते, आप Br को इस कार्बन के साथ अटैच कर देते, CH2Br और हाइड्रोजन चला जाता इसके पास, जो कि गलत था. हमने Markovnikov रूल फॉलो करना है. सो दिस इज द Markovnikov रूल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट वन इज एडिशन ऑफ halogens. Okay, when we are going to add halogens to the alkene, this is the mechanism you are going to follow. When halogen approaches an alkene, it becomes polarized. What I said, when halogen approaches an alkene, it becomes polarized. Polarized का मतलब एक ब्रोमीन पे partial positive charge आ जाएगा और दूसरे ब्रोमीन पे partial negative charge आ जाएगा. So these electrons, pi electrons, are going to attack the positive charged bromine, और ये जो negative bromide है ये निकल जाएगा. यहाँ पे मैंने ब्रोमीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया है बिकॉज ब्रोमीन इज मेकिंग 2 बॉन्ड्स, हालांकि ब्रोमीन एक बॉन्ड बनाती है. कार्बन के, इस कार्बन के भी बॉन्ड्स पूरे हैं, इसके भी पूरे हैं, बट ब्रोमीन इज मेकिंग 2 बॉन्ड्स. इन स्टेप नंबर 2, दिस ब्रोमाइड आयन इज गोइंग टू अटैक ओवर द कार्बन. दिस इज नोन एज ब्रोमोनियम आयन. दिस ब्रोमाइड आयन विल अटैक टू द कार्बन. ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा. जब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो ये ब्रोमीन सिर्फ इस कार्बन के साथ अटैच रहेगी, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और ये वाली ब्रोमीन इस कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएगी. बनेगा CH2Br एंड CH2Br. दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2. 1 पे ब्रोमीन है, 2 पे भी ब्रोमीन है, सो नाम क्या होगा, 1,2-diabromoethane, बिकॉज वी हैड 2 कार्बन. दिस इज बेसिकली अ टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड. जब हम ब्रोमीन वाटर
के अंदर एल्कीन ऐड करते हैं तो उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है। अगर कलर डिस्चार्ज हो जाए, कलर रिमूव हो जाए, तो इसका मतलब है हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। बट इफ द कलर इज नॉट डिस्चार्ज, इसका मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज द टेस्ट फॉर डबल बॉन्ड डिटेक्शन। सेकेंड लास्ट इज एडिशन ऑफ हाइपोहेलिस एसिड। हाइपोहेलिस एसिड का फॉर्मूला है HOX। बेसिकली क्या होता है, जब हम एल्कीन को एक्वस सोल्यूशन ऑफ हेलोजन में ऐड करते हैं, दिस इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ हेलोजन. When we add alkene to the aqueous solution of halogen, what happens is that halogen reacts with water and form hypohalous acid and HX. This hypohalous acid reacts with alkene, so it has two groups, this halogen group and this OH group. The X group goes to the carbon 1 and OH group goes to the carbon 2, and this is known as halohydrin. Halo, this, and hydrin because of the hydroxyl group. So this compound is known as halohydrin because we have added halogen as well as hydroxyl group to it. Last one is addition of sulfuric acid. In this we are going to add H2SO4, addition of sulfuric acid. H2SO4 has formula, this one, if we are going to show the poles of H2SO4, एक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, बाकी पूरा जो एंड है ये क्या है, पार्शियल नेगेटिव. सो दीज इलेक्ट्रॉन्स एज यू ऑल नो आर गोइंग टू अप्रोच ऑन दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन और ये क्या होगा, निकल जाएगा. अच्छा, अब क्या होता है कि हमारे पास एक कार्बन के पास, अगर मार्कोनिकॉव्स रूल देखें तो मार्कोनिकॉव्स रूल में क्या कहता है कि हमारे पास एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा और दूसरे कार्बन के पास नेगेटिव एंड जाएगा. अब यहाँ जो मैंने कार्बन ली है वो सिमेट्रिकल है, तो डजेंट मैटर मैं पॉजिटिव इसके साथ लगाऊं या इसके साथ लगाऊं. सो अब मैंने क्या किया है, दिस हाइड्रोजन हैज बीन अटैच टू दिस कार्बन, ये हो गया CH3, एंड दिस नेगेटिव एंड हैज बीन अटैच टू दिस कार्बन, ये हो गया CH2OSO3H. जब हम इस सल्फेट को वाटर में बॉईल करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये H2SO4 रिमूव हो जाता है, क्या होगा H2SO4 और पीछे क्या रह गया, जस्ट OH. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनी, अल्कोहल. सो बेसिकली अगर आप देखो तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, दे बोथ आर सेम, तो इनको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ. H2SO4 H2SO4, दे बोथ आर सेम, इनको मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ. तो बेसिकली हुआ क्या है, सिर्फ हमने वाटर ऐड किया. अब ये स्ट्रक्चर देखें और ये वाला स्ट्रक्चर देखें, H2O, एक हाइड्रोजन इधर चला गया, बन गया CH3, पीछे रह गया OH, वो इसके साथ चला गया इस कार्बन के साथ, CH2OH. तो बेसिकली हुआ क्या है, वाटर ऐड हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन. अब मैंने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ली है, प्रोपीन, इसके अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है. नाउ यू ऑल नो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, the negative end, which is this one, will go to the carbon which has less number of hydrogen. So this negative end will go to this carbon CH, and H will go towards this carbon. तो ये हो जाएगा CH3 CH CH3 और ये negative end इसके साथ अटैच हो जाएगा. Again when we are going to boil it with water, तो ये वाला end replace हो जाएगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ और ये बन जाएगी सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल किसे कहते हैं, मैंने कल भी बताया था. सेकेंडरी अल्कोहल इज द वन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज फर्दर अटैच्ड टू टू अदर कार्बन्स, और साथ में क्या रिलीज हुआ, H2SO4. सो बेसिकली एडिशन ऑफ H2SO4 इज एडिशन ऑफ वाटर. बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एल्काइंस. टिल देन अल्लाह हाफिज़.